Organic chemistry. Now, I know that this is the last topic and it's easy to be intimidated by it, but don't worry. The only difference in organic and the rest of it that you need to have in your perspective is that in the rest of chemistry, what matters most about the properties and the way things work is the way they're bonded. Bonding और formula, उनसे हमें पता चलता है कि वो चीज़ कैसा behave करेगी. But in organic में structure is supreme. Structure अगर आपको समझ आ रहा है ना, आपको उसकी सारी properties समझ आ जाएंगी. ठीक है? That is the key. आपने सिर्फ structure को देखना है और बाकी automatically उससे हो जाएगा. Alright, so let's get started. Organic में structure को समझने के लिए there are a few bits and pieces that we should be comfortable with. So one thing you should all have right now with you is a piece of paper and something to write with. कोई pen and paper होना चाहिए आपके पास, because we will be working on things. Assalamu alaikum, assalamu alaikum everybody. All right, so let's get started. पहली चीज organic में हम terminology सीखते हैं. So we'll start with counting. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. I think इतना काफी है. So 1 is called met, 2 is et, 3 is prop, 4 is but, 5 is pent, and 6 is hex. And what are we counting? We are counting number of carbons. ठीक है, हम कार्बन को देख रहे हैं. कितने कार्बन होंगे उससे पता चलेगा कि उसमें कितने, उसका नाम क्या हो. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात, जब भी आपने स्ट्रक्चर बनाने उनकी बॉन्डिंग, उसमें आपने रिमेंबर HONC. Hydrogen always makes 1 bond, oxygen always makes 2 bonds, nitrogen 3, carbon 4. जब भी आप उसका स्ट्रक्चर बनाओगे, you have to make sure कि आपके पास हर ऑक्सीजन एटम की 2 बॉन्ड्स हो, नाइट्रोजन की 3 हो, कार्बन की 4 हो, इससे ज्यादा ना इससे कम. ठीक है. ओके, क्लियर एवरीबॉडी. नाम में 2 चीजें देखनी है. एक तो ये कि उसका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और दूसरा हमने देखना है कि उसकी बॉन्ड्स जो हैं 1 2 3 4 इस तरह से पूरी होनी चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज कि ठीक है, हमारे पास मेथड प्रॉप ब्यूट होगा, बट ये तो हो गया कार्बन्स कितने हैं. उसके स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चलता है? देयर इज अ थिंग कॉल्ड होमोलोगस सीरीज. ओके, होमोलोगस सीरीज. In other words, this is the family of compounds. ठीक है. क्यों? Because all of these compounds have same general formula. They have similar chemical properties. मतलब अगर एक बर्न करता है ना तो दूसरा भी बर्न करेगा. हाँ, हो सकता है वो थोड़ा सा इतना तेजी से बर्न ना करे जितना दूसरा करे, लेकिन अगर एक फ्यूल के तौर पे यूज हो सकता है, उसी होमोलोगस सीरीज में दूसरा भी फ्यूल के तौर पे हो सकता है. अगर एक जो है वो ऑक्सीडेशन करता है, दूसरा भी ऑक्सीडेशन करेगा. दे हैव ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. ट्रेंड्स का मतलब ये हुआ कि इफ वन थिंग हैज हाई डेंसिटी, then the next one will have even higher density, and that is how they will increase. If one of them has a melting point, the other one will have a higher melting point, the next one will have even higher melting point. There will be a trend in there. If one doesn't conduct electricity, none of them will conduct electricity. Lastly, they have same functional group. अभी functional group क्या होता है? Functional group is something that determines the properties of atoms. Okay, so functional group, it is atoms or group of atoms that determines the chemical properties of a compound. Okay, now let's get started with homologous series क्या होती हैं और functional groups क्या होते हैं. So हमारे पास ज्यादा नहीं, 3-4 functional groups हैं और homologous series भी इतनी हैं. So the first homologous series that we should know is alkane. ऐसे जैसे मैंने आपको कहा ना, this is family of compounds. तो जैसे मेरा नाम है अहमद बुखारी,
Now the Ahmed part is my personal name and the Bokhari part is my family name. ठीक है? So मेरे भाई के नाम में भी बुखारी होगा लेकिन उसके नाम में अहमद नहीं होगा because उसका नाम कुछ और होगा because my personal name is Ahmed, his name is something else. But the family name is same for both of us. Okay? And we have a lot of similarities in the way we look, in the way we behave, in the way we talk. There's a lot of similarities there. But at the same time, I have different likes or dislikes and he might have different strengths or weaknesses. So कुछ differences हम दोनों में हैं even though we both come from the same place, same family. Alkanes भी एक फंक्शनल ग्रुप है, एक फैमिली ऑफ कंपाउंड्स है. इन सब के अंदर एक ही तरह के बिहेवियर्स होंगे, वो थोड़े थोड़े उनमें डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे. ठीक है? इनके नाम के एंड पे हमेशा एन होगा. ये इनका फैमिली नेम है. एल्केन्स के एंड पे एन आएगा. तो अगर एन आ गया यू आइडेंटिफाई कि ये एल्केन्स है. अच्छा, इसके स्ट्रक्चर में क्या बात है? ऑल ऑफ देम हैव जस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ओनली. कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है. ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स. ठीक है? इनफैक्ट इस तरह की चीजों के लिए एक नया नाम भी होता है. दीज थिंग्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड. सैचुरेटेड का मतलब है कि कोई भी कार्बन की दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है. ऑक्सीजन की बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, हाइड्रोजन की बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कार्बन विद कार्बन. कार्बन की दूसरे कार्बन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हों तो उसको सैचुरेटेड बोलते हैं. सो एल्केन्स आर सैचुरेटेड. इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, which means that they have two more than double carbons. इतने हाइड्रोजन होते हैं उनके पास. यानी कि अगर किसी के पास दो कार्बन्स हैं तो you will do C2H2 times 2 plus 2 यानी कि C2H6. तो दो कार्बन्स वाले एल्केन में ये उसका फॉर्मूला होगा. ठीक है? दैट इज द जनरल फॉर्मूला. अच्छा, दूसरी फैमिली दैट वी हैव इज एल्कीन. इनके नाम के एंड पे इन होगा और इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इनके स्ट्रक्चर में यू विल हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. You don't need all of them to be double bond. You need at least one. Okay? So at least one carbon carbon double bond. दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, जितनी मर्जी हो सकती हैं, बट मिनिमम एक होनी चाहिए. और इनका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n. तो इसमें जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन. अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज जिसमें ये फॉर्मूला यूज होता है वो एल्कीन है. इट जस्ट मीन्स कि एल्कीन्स में ये फॉर्मूला लगता है. हो सकता है कोई और चीज हो जो एल्कीन ना हो लेकिन उसका फॉर्मूला भी ऐसा ही हो, एंड दैट इज फाइन. आई विल शो यू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ दैट. थर्ड फैमिली जिसके बारे में हमें ज्यादा नहीं जानना, दैट इज एल्काइन. एल्काइन जो है उसके नाम के एंड पे YN आएगा, एंड दीज विल हैव एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. Their general formula is not required in O levels or IGCSE. It's a very simple one. मतलब इसमें प्लस होता है तो उसमें माइनस हो जाता है. ठीक है? But we don't need to know this at the moment. ठीक है? If you have seen that meme, तो इन फॉर्मूला को याद करने का वो एक आसान तरीका भी है. I don't endorse it, but if it works for you, sure, go ahead. Okay. Then we have alcohols. एल्कोहल में नाम के एंड पे OL आएगा. दैट टेल्स अस कि ये कौन सी फैमिली. हाँ, कई दफा NOL भी हो सकता है. OL या NOL, बोथ ऑफ देम वर्क. एंड इनमें कार्बन की बॉन्ड्स जैसे मर्जी हों उससे फर्क नहीं पड़ता. दे नीड टू हैव OH इन देम. ठीक है? सो दे मस्ट हैव OH. तो इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? OH. अच्छा, अब जब भी इसको बनाएंगे आप, यू नीड टू मेक श्योर कि आप O और H के बीच की बॉन्ड बनाएं. डोंट स्किप ऑन दैट, मेनी स्टूडेंट्स डू. अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+1 OH. नाउ दिस पार्ट CnH2n+1, दिस वन इज अ कॉमन थीम इन मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इसको हम बोलते हैं एल्काइल और इसका सिंबल होता है R. तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि alcohols are R with OH, या खाली फंक्शन ग्रुप का OH देख लो. सो alkyl यानी कि CnH2n+1 जब भी आएगा उसको हम alkyl बोलेंगे और उसका सिंबल होगा R.
अब CnH2n+1 खुद से कोई भी कंपाउंड नहीं हो सकता, लेकिन सोचो अगर मैं CnH2n+1 लूं और उसमें एक हाइड्रोजन डाल दूं तो मेरे पास एल्केन आ जाता है। अगर मैं उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो मेरे पास एल्कीन आ जाता है। अगर मैं उसके साथ OH लगा दूं तो मेरे पास एल्कोहल आ जाता है। और अगर मैं उसके साथ दिस लास्ट थिंग कार्बोक्सिलिक एसिड वाली, कार्बोक्सिलिक एसिड्स they have OIC at the end of the name. जैसे normally acids have IC at the end of the name, like hydrochloric or hydrobromic or nitric or sulfuric. All of them have IC at the end of the name. These have OIC at the end of the name. O means organic, so they are organic acids. Okay, इनके नाम के end पे OIC होता है या NOIC होता है, ठीक है। अच्छा, और इनमें COOH होता है इस तरह से, ठीक है, जिसको आप COOH भी लिख सकते हो, यानी कि RCOOH के एल्काइल होगा और उसके साथ COOH। तो एल्काइल का फॉर्मूला हमें पता है CnH2n+1 COOH, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू नेम देम। लेट्स से मेरे पास एक कार्बन है जिसमें दो मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें दो कार्बन है और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है, तो इसका मतलब है वो एल्केन है। और दो कार्बन हैं तो उसका नाम होगा एथ और उसकी फैमिली नेम होगा एन, सो इट इज एथेन। लेट्स से आई हैव अ कार्बन विद थ्री कार्बन, आई हैव अ कंपाउंड विद थ्री कार्बन्स और उसमें किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड है, तो मैं उसको बोलूंगा थ्री कार्बन की वजह से प्रॉप और डबल बॉन्ड की वजह से प्रॉप इन, ठीक है। दैट्स हाउ वी नेम देम। ओके, कैन एनीबडी टेल मी if there's a carbon with, if there's a compound with 4 carbons and it has OH in it, so what might be its name? Butanol. Butanol, very good. So 4 because but and ol because of the OH part. So that is how you name them. It's pretty straightforward concept. All right, now let's get started with how we draw them. Okay, so I'll help you out with them. I need you to take out your pen and paper and work with me on this. So let's start with alkane. Okay, here's what you have to do. Pick any number between 1 and 6. Let's say I pick 4. So I'll put 4 carbons in a row. Done. And now, because I'm working with single bonds only, I will fill it with hydrogens. Once you're done with the main thing, just fill this thing with hydrogen. How? You know that carbon should have 4 bonds. So every carbon in this should have 4 bonds. So let's see. I have this carbon has 1 bond already. So it needs 3 more. So I'll put 1, 2, 3. And these are supposed to be hydrogen. So 1 hydrogen, 2 hydrogen, 3 hydrogen. Similarly, next one already has 2 bonds. So it will get 2 more hydrogen. Next one has 2 bonds already, so 2 more hydrogens. And next one has just 1 bond already. The rest of them are empty, so I'll just put 3 hydrogen. So hydrogen is kind of like a filler. This thing is its displayed formula. Displayed formula tells me how this thing is, like how the bonding is. Now, I want you to draw it for any alkane. Pick any number between 1 and 6 and try to draw it just like this. Go on, everybody. Okay, so I hope you have done it. Now, here's what you have to do. Count all the carbons. So for example, in this one, I have 4, so I'll do C4. And I have 10 hydrogen, so C4H10. Okay, now this one is going to be my molecular formula. Now notice that this formula tells me a lot about its behavior, but this one tells me absolutely nothing. All this one tells me is how many I have and what I have, but this one tells me how they are arranged. So this gives me a lot more information. There's another formula that tells us a lot about it. That one is, so here's what you'll do. You'll start with the first carbon and just write whatever it is attached to. So this carbon has 3 hydrogens with it. Now I move to the next carbon. So this carbon has 2 hydrogens with it.
Now I go to the next carbon. This carbon has 2 hydrogens with it. So the next formula that we should be making for this is C2H5. अब इसमें मैंने ये किया कि I've taken a ratio of these two. And this one is called empirical formula. So this formula tells me the ratio. This tells me the actual number. This tells me how the carbon chain is, and this shows all the bonds. 4 different ways of looking at each compound. And what will its name be? Its name would be, you have 4 carbons, so bute, and they're all single bonded, so ane, butane. Now, here's one thing I can do. I can see that I have 4 carbons in a row. तो मैं एक काम करूंगा, अब मैं 4 की बजाय 3 in a row करता हूं. So I have 1, 2, 3, and 4th carbon मैं कहीं और पे लगा देता हूं. So let's say I put the 4th carbon here. And now I fill their bonds. So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4. Now let's see, is this a completely new compound or not? So the rule is you pick a pencil and you try to join as many as you can, as many carbons as you can, without picking a pencil or going back. That's the game. You start with a pencil on one side, you trace as many carbons as you can without picking a pencil. So let's see. 1, 2, 3, 4. Okay. Let's try in this one. 1, 2, 3, 4. There's the same thing. This is not a different compound. They are the same thing. Okay. Let's say now I still have a chain of 3, but this another carbon, I put it here. And I complete the bonds. 1, 2, 3, 4. Okay, now let's try this one. 1, 2, 3. I can't join the 4th one because I'll have to go back, which I can't, which is not allowed. So that means this has, okay, let's try one more time. 1, 2, 3. Again, I can't join the 4th one without going back or picking a pencil. This basically means that this compound and the previous compound are different. They're not the same. But let's count the atoms. I have C4, and all of these are hydrogens, all of these. So that is still 10 hydrogens. The molecular formula of this one is the same as molecular formula of this one. But the displayed formula or the structural formula will be very different. Like for this one, the structure formula will be, I have CH3, then the next carbon has a hydrogen, this carbon, and then there's this whole thing on the side. These things, these are called branches. And the branches are mentioned in brackets. So CH3. That on this branch, I have 1 carbon with 3 hydrogen. Now I go back to this, and the next carbon has 3 hydrogen. Now this structural formula is very different from the previous structure formula. But the empirical formula is still the same. C2H5. So do you see that even though these two formulas are same, these are different. And that's why this one is an isomer of butane. Sir, आपने CH3 bracket में क्यों लिखा है? Because if I start here, 1, 2, 3, if this is my main chain, then this is not part of that. So इसलिए मैं इसको bracket में लिखूंगा. This is a branch. जो भी चीज main chain में होगी ना, वो bracket में आएगी. Oh, sir, yeah, thank you. You're welcome. All right, so now this is an isomer. What are isomers? Isomers are compounds with same
molecular formula, and by that it also means that they have the same empirical formula but different structure. Okay. Yes, Abdurrahman, you're absolutely right. So compounds with same molecular formula, that means that the number of atoms in both of them, they're identical, but they don't have the same structure, which means कि उनमें सिवाय इसके कि उनमें सेम मोलेकुलर फॉर्मूला है, कोई और चीज सेम नहीं है, कुछ और सेम नहीं है. Everything else is absolutely different, poles apart sometimes. सिवाय मोलेकुलर फॉर्मूला के कुछ भी सेम नहीं है. So technically they're not the same compound. Okay, they're not the same compound. ठीक हो गया? All right. In homologous series, I forgot to mention one thing, that they differ between each other by CH2. Let me illustrate that with an example. So let's say मैं alkenes को draw करने की कोशिश करता हूँ. My first alkenes में क्या होता है? Alkenes have a double bond. So my first alkene should have 2 carbons, right? So मैं 2 carbons बनाता हूँ. उनमें double bond है. I fill them up. So 1, 2, 3, 4. पहली बात, because of this double bond, they are unsaturated. Why? Because they have at least one carbon-carbon double bond. Or you can also say that they have a carbon-carbon bond that is not single. Okay? So that's what they have. Okay. So this one is eth because 2 carbons and ene because of that. Now let me say I have 3 carbons की chain. So 1, 2, 3. और मैं इसमें यहाँ पे double bond बना देता हूँ. So this one will be, so again I fill it up with hydrogen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3. So this is 3 carbons. So prop ene. अब इसका structure formula क्या होगा? CH2 double bond CH3. ठीक है. So जो भी चीज double bond आएगी, we will write that in the structure formula ताकि बात clear हो जाए. All right, let's try one more. Now I have 4 carbons. So 1, 2, 3, 4. और मैं यहाँ पे double bond बना देता हूँ. अच्छा, अब इसका नाम क्या होगा? Let me fill it up first. So 1. Now this one, मैं ये भी तो कर सकता था कि मेरे पास 4 की चेन थी, तो मैंने पहले पे डबल बॉन्ड बनाया है, मैं दूसरे पे डबल बॉन्ड बना देता हूँ. Like it's up to me, right? And I can. It's valid. So I'll just fill it up again. Okay. And let's say मैं एक दफा और ट्राई करता हूँ और मैं थर्ड पे डबल बॉन्ड बनाता हूँ. And I fill it up. Okay, now let's try to name these. First of all, they all have 4 carbons, so they are all bute. They all have double bonds, so they are ene. लेकिन अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला का देखूं ना तो बड़ा डिफरेंट है. मतलब दिस वन इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3. दिस वन इज CH3 CH फिर डबल बॉन्ड फिर CH फिर CH3. And this one is CH3 CH2 CH double bond CH3. Okay, now here's what you have to do. You have this double bond on the first carbon. In the chain, you have them on the first carbon. So we'll call it but 1-ene. And in the second one, I have it on the second carbon. Like अगर मैं यहाँ से start करता हूँ 1, 2, 3, 4. So it's a second one. Similarly, अगर मैं यहाँ से start करता हूँ 1, 2, 3, 4. So even then it's on the second carbon. So this is but 2-ene. And these two are isomers of each other. इन दोनों में अगर मैं इनका फॉर्मूला देखूं तो C4H8 होगा इन दोनों में. But the structure is different, as you can see here as well as over here. अच्छा, अब जरा थर्ड वाले को देखते हैं. थर्ड वाले में I have 1, 2, 3, 4. So third carbon पे double bond है. But I can also see
it from this side, 1, 2, 3, 4. And this one will give me but 1ene. And we always pick the names with smaller numbers. So you clearly, this one is the same as this one. Because अगर मैं इसको इस तरफ से देख रहा हूं तो इसको मैं इस तरफ से देख सकता हूं. And they're identical. Another way to looking at it, just look over here. CH2, CH, CH2, CH3. Okay? And if you look over here, तो ये भी यही है. CH2, CH2, CH, CH, CH2, CH2, CH3, CH3. So molecules can start from left or right. It doesn't matter. So these two are identical. वो एक जैसे हैं. They are the same thing. But they are not isomers. These two are different. They are isomers. So isomer बनाने के हमने दो तरीके देखे. एक तरीका क्या था? You chain the branch. So for example, अगर आपने 4 की branch बनाई है, तो अब आप 3 की branch बना लो. दूसरा मेथड भी saw कि हम क्या कर सकते हैं? हम position change कर सकते हैं. So अगर आपने branch change नहीं करनी है, you change the position. So this has first carbon with double bond, and now you can have the second carbon with double bond. But the third one will not, because third one is again same as the first one. Okay, let's try one more. Alcohols को try करते हैं. So in alcohols, the first alcohol that I have is 1 carbon with OH and the rest of it hydrogen. And its structure formula will be CH3OH. And it is मतलब CH4O भी लिख सकते हो आप इसको, लेकिन क्या जरूरत है, ये ठीक है. And इसका नाम होगा methanol. इसको meth1ol भी आप बोल सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, इसको लोग methanol ही बोल सकते हैं. Let's try one more. So 2 carbons, one of them with OH, and there you go. So this one is C2H5OH. ये इसका molecular formula कह सकते हैं इसको, and this one, the second one is CH3CH2OH. This is the structure formula. This has eth, 2 carbons, and ethanol because it has ol in there. अच्छा, इसको मैंने 1 2 क्यों नहीं बोला? क्योंकि अगर मैं फर्स्ट पे भी लगाता ना OH और यहाँ पे नहीं लगाता, तो तब भी ये आइडेंटिकल बनता. इसका कोई आइसोमर अल्कोहल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. इसका आइसोमर हो सकता है, बट वो अल्कोहल नहीं होगा कोई और आइसोमर. Let's try one more. This time I have 3 carbons. Okay, and OH मैं इधर लगा देता हूँ. ठीक है. So this one is C3H7OH. या इसको मैं CH3 CH2 CH2OH लिख सकता हूँ. और एक और ऑप्शन भी है. What if मैंने ये थर्ड कार्बन पे लगाया ना OH, या जिसको फर्स्ट कार्बन भी बोल सकते हैं. What if I put it here? Let's try that. So I have 3 in a row again, and this time I'll put OH on the second carbon. Notice that I put bond between O and H. Don't skip on that. बाकी मैं fill कर देता हूँ. Let me try it for the first one again. So 3 रो में बनाए और मैंने यहाँ पे OH लगा दिया. Notice I put O with carbon, क्योंकि O double bond बनाता है या 2 bonds बनाता है, H single bond ही बनाता है. Okay, let's try this one. So this one is C3H7OH still. This one's also C3H7OH, but the structures are different. This one is CH3CHOH. या आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो या ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. And then CH3. And this one is again HOCH2 CH2 CH3. But notice कि ये भी फर्स्ट कार्बन है और ये भी फर्स्ट कार्बन है. So these two are identical, है ना? तो these are not isomers. So ये वाला तो एम ही हमने बना दिया. We don't need it. Now let's try to name this one. This is prop, sure. This one's also prop. This one's all, yes. This one's all, yes. But in this one, I have carbon on. Which carbon has OH? So there are 2 ways of looking at it. One is I can say 1, 2, 3. So this is 3. But
Another way of looking at it is 1, 2, 3, and this is 1. And we always go for the one with smaller carbons. So this one will be prop 1-ol. And the second one, carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3. So it's prop 2-ol. So clearly these are isomers. So go on, try to make isomers of the next one, butanol. Go on, make at least 2 isomers of butanol. Okay, so again, I'll put 4 carbons in a row. Okay, so in the first one, I'll put OH here. And in the second one, I'll put OH here. I can also put it on this one, but if you notice, ये इधर से second है, ये इधर से second है, so they're both identical, तो मुझे ये बनाने की जरूरत नहीं है. I'll fill the rest of it. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. अच्छा, अब इसका नाम होगा ब्यूट, because 4 carbons, 1 ol, और इसका नाम होगा ब्यूट 2 ol. Okay, so you can clearly see that these are isomers. And the last homologous series that we have, carboxylic acids. So carboxylic acids का मैं आपको 2 का structure बना देता हूँ. And I would like you to attempt the rest of them. So they have COOH in them. So let's say मेरे पास 2 carbon है. So 1, 2. किसी एक पर मुझे double O बनाना है with H. And the rest of it, I'll just fill it up. And this one is ethanoic. That's the name, ethanoic acid. Let's say I have 4 carbons. 1, 2, 3, 4. Fourth पे मैं ये बना देता हूँ, and the rest of them I'll just fill it up. So and this one is butanoic acid. These are acids, which means they give H positive. और वो कौन सा H positive होगा? वो हमेशा O के साथ वाला होगा. This is the H that they will lose, which means कि जब ये इसको छोड़ेंगे, इसको lose करेंगे, so this thing will simply make this thing, which has a negative charge, and H positive. So ये इसमें split हो जाएगा जब भी आप इसको water में add करोगे. तो H के अलावा जो कुछ भी होगा उस पे negative charge आ जाएगा. That's why they are acids. All right. So that is it for the naming and for functional groups and isomers. We will start with more of them. ठीक है, और उससे हम देखेंगे उनका नाम कैसे चेंज होता है या उसका प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं. So what I want you to do now is that pick all the 4 or 5, 4 homologous series that we have. Try to draw their displayed formula and structure formula for as many isomers as you can. Okay,